ELISA results को जब report किया जाता है that are going to be reported in the form of concentration or with certain specific units. जब हम प्रोसीजर के एंड तक जाते हैं तो जो हमारे पास कलर इंटेंसिटी है दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय द ELISA प्लेट रीडर इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बेंस. उस एब्जॉर्बेंस को आप कैसे रिपोर्ट करना है दैट इज गोइंग टू मेक अप द रिजल्ट्स फॉर ELISA. ELISA ऐसे के रिजल्ट्स को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में रिपोर्ट कर सकते हैं. इट कैन बी क्वांटिटेटिव, इट कैन बी क्वालिटेटिव और इट कैन बी semi-quantitative. Quantitative results means we are going to report the quantity of antigen in any given sample, and for that purpose the absorbance value is going to be correlated with a known standard curve, with a standard curve which is prepared by using the known concentrations of that particular antigen. जैसा कि इस पिक्चर में देखा जा सकता है हमारे पास जो ग्राफ है दैट इज़ जनरलाइज्ड स्टैंडर्ड कर्व. हम नॉन स्टैंडर्ड्स के साथ एंटीजन स्टैंडर्ड्स के साथ उनकी कंसंट्रेशन प्रिपेयर करके एक स्टैंडर्ड कर्व प्रिपेयर कर सकते हैं. और फिर जब अननोन सैंपल की जो भी एब्जॉर्बेंस वैल्यू आती है उस एब्जॉर्बेंस वैल्यू को रीड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ that this is the absorbance, this will be the concentration, this is the absorbance, this will be the concentration. Ultimately these results give us the quantity in measurable units, that is microgram per microliter or milligrams per milliliter and so on. This is the example of quantitative results. Then comes the second type, the qualitative results. क्वालिटेटिव रिजल्ट्स में हमें किसी किस्म के स्टैंडर्ड कर्व की ज़रूरत नहीं पेश आती. क्वालिटेटिव रिजल्ट मीन्स द क्वालिटी. दैट मीन्स वी से वेदर अ प्रोटीन इज़ प्रेजेंट और इट इज़ एब्सेंट. दिस इज़ अ येस और नो रिजल्ट. अगर हमारे पास कलर इंटेंसिटी चेंज नज़र आती है गिवन सैंपल में दैट मीन्स द एंटीजन इज़ प्रेजेंट or the antibody is present, and that is our result which we report, and then we don't need to give any kind of measurable quantity. The semi-quantitative results, as the name indicates, we give some relation in terms of quantity, and for this type of results we actually compare different test samples, and those different test samples are compared on the basis of differences in the color intensity, and ultimately we report that they are different in quantity as well, and this is going to be referred as semi-quantitative results. Sensitivity is one of the most important question of any particular assay. How sensitive a particular assay could be is a question before we proceed further to perform or to use that assay in the laboratories. ELISA itself is quite sensitive assay. It can determine any protein, any antigen or antibody from 0.01 nanogram to 0.1 nanogram in the sample, which is quite low quantity. लेकिन जो सेंसिटिविटी है वो सिर्फ क्वांटिटी पे मैटर नहीं करती. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंटीबॉडी एंड एंटीजन इंटरेक्शन, दैट इफ द एपिटोप विच यू आर गोइंग टू यूज इज क्वाइट good for that particular antigen. Then to enhance the sensitivity we can use some substrate which have enhanced chemiluminescence activity. Then choice, direct versus indirect method. Indirect method is good in giving good signals, good results. However, when we use indirect method, there are likely chances of having high background signal as well that needs to be removed to report the actual results.